Hey guys, welcome back to my channel. So आज की जो वीडियो है उसमें मैं बताने वाली हूँ how I do my graphic eye makeup look. So first of all, I'm using a moisturizer. I'm done with my toner and cleansing. So the first part I'm going to do is the moisturizer. It's a gel based moisturizer, all skin type. It's very lightweight. एंड जब तक ये एब्जॉर्ब नहीं होता तब तक हम इसको लगाकर 5 मिनट तक छोड़ देंगे. After 5 minutes, I'm using a Foxtail का tinted SPF plus primer. It's give a mattify look. It also available in 3 different shades. So here I am carrying a primer which also have sun protection. It has 50 plus SPF. Also I will put it on my neck area. Now I'm going with a liquid concealer which is one shade lighter than my skin tone. I'm not applying any color corrector or anything else. So here I'm directly applying after primer concealer, and I will not using more brushes. So I will just blend with my fingers only, as you can see in the video, because I think fingers or using your hand will give a full coverage. This is very subtle look, not very heavy. आई हैड ऑल्सो ट्राइड कि काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी आर्टिस्ट लोग हैं जो अपने हाथ से पूरा मेकअप करते हैं. अगर पूरा नहीं तो एटलीस्ट दे यूज़ टू डू देयर बेस विद देयर हैंड्स फॉर फुल कवरेज. So I thought let's try it and see the result that it really work or not. So yeah, it actually worked on my skin. As you can see, I had not applied any color corrector or anything, but it also hide all the things. And yeah, आप चाहे कितना भी मेकअप कर लो, but जो भी स्कार्स है, फाइन लाइन्स है, रिंकल्स है, वो तो दिख के आने ही वाले हैं. हाँ या इफ़ यू डू एडिट्स एंड ऑल देन आई थिंक आपको एकदम स्मूथ इफेक्ट मिल जाएगा. बट व्हेन यू सी फेस टू फेस तो ये सारी चीज़ें तो रहने ही वाली है. सो इट्स नॉर्मल एंड नेचुरल. सो या अब मैंने फिर लगाया था फिक्सर. आफ्टर फिक्सर आई विल वेट फॉर my fixer to dry, and now I'm applying 2 shade lighter concealer to on my highlighting areas to enhance my makeup. जो लिक्विड कंसीलर है वो मेरे मैक का है and the shade is 01. And now with the help of brush I'm gonna blend it all over my face. जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइटिंग एरियाज़ पे जो अप्लाई किया है उनको मैं अच्छे से ब्लेंड आउट कर दूँगी. एंड मेक श्योर आप ब्लेंड करो तो उन्हीं एरिया में करना जहाँ पर आपको हाईलाइटिंग एरियाज़ जहाँ पे आपने अप्लाई करा है उसी एरिया को आप फोकस करके हाईलाइटिंग करें. कंसीलर जो लगाया है वो. आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू डू ए प्रेस पाउडर. ऑल्सो यू कैन सी कॉम्पैक्ट पाउडर. नाउ आई विल जस्ट बेक ऑल ओवर माई फेस ताकि ड्यूनेस ना लगे ज़्यादा. यू कैन सी द डिफरेंस. एक साइड पूरे ड्यूई जैसा फिनिश आ रहा है और एक साइड पूरा मैटिफाई फिनिश आ रहा है. सो या आई एम गोना लॉक विद दिस लूज. यू कैन ऑल्सो यूज़ लूज पाउडर इफ़ यू हैव. आई डोंट हैव लूज पाउडर, so I'm using compact powder to lock my base makeup. And now I'm going to do my blush and contour.
The blusher and contour palette is from Glam 21. With the same blusher I'm also gonna do my contouring, because मैंने ब्लशर जो लगाया है वो शेड थोड़ा ब्राउनिश भी जाता है, so yeah. With the same blusher I'm applying on my jawline as well, and also on my forehead. And yeah, now it's time for highlighter. तो जो हाइलाइटर मैंने अप्लाई किया है वो पीच शेड का है, एकदम लाइट शेड है, सटल सा मेकअप लुक करना है, सो मैंने एकदम लाइट यूज़ किया है, ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया है, हल्का हल्का हाथों से ही हाईलाइट किया है. Now I'm applying eyes. Yeah, now I'm applying on my eyes a liquid concealer to set a base. After blending, I'm gonna lock this base with a compact powder or a loose powder. आई में ब्लेंडिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है प्रॉपर वे में, ताकि कोई कट पीस ना हो. Now I am applying compact to lock the base. Now it's time for eyeshadow. So here I'm using Huda Beauty का palette, nude वाला, and here I am using a lighter shade of pink, or you can say nude, but मुझे तो ये pink लगता है, so I must call this shade a pink shade, or you can also say translucent shade. इसको हमें कोई आई लीड पर लगा देना है ऑल ओवर द आईज. आई डोंट नो कि वीडियो इतना ब्लर क्यों हो गया है, बिकॉज मेन जो था यही लुक दिखाना था, एंड आई डोंट नो व्हाई इट लुक्स ब्लरी, बट आई मेक श्योर कि नेक्स्ट वीडियो में ऐसा कुछ इशू ना हो. Once I'm done with this, I'm gonna apply a blue liner. It's a crayon liner from Bonjour. It's very pigmented, but it's not waterproof. Now I'm gonna create a graphic line. As you can see in the video, I know it's blurred, but I hope you can understand कि जिस टेक्निक से मैं कर रही हूँ वो समझ आ रही होगी. Now the same shade I'm applying on my lower lash line with the help of small flat brush. And now it's time for my pink liner. This is also a crayon eyeliner, so इसको मैं अपने waterline पर अप्लाई करूँगी. This liner is from ADS.
choosing my eyelash color because I'm not applying here any fake lashes. I'm applying the mascara. Now you can see the look. It's looking so gorgeous. एंड अब पता चल गया होगा कि जो ब्लर इफेक्ट था वो आई थिंक नोटिफिकेशन की वजह से हो रहा था या कैमरा में शायद कोई प्रॉब्लम आई होगी, बट नाउ यू कैन सी द लुक. सो यस, सो दिस इज द फाइनल